जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल पठानिया आज की इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि जब हम ज़िंदगी शुरू करते हैं तो वी ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, वी ऑल वांट टू राइज एंड शाइन। बट कई बार ये ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे हम फेलियर का हमें सामना करना पड़ता है और उस समय हमें लगता है कि हमारी जो हिम्मत है वो टूट गई है और हम किसी काबिल नहीं हैं। No, that is the time you have to take stock of yourself. This is what we talk about, that art of self motivation. तो आज के हम एपिसोड में बात करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट द setback, or in other terms when we call it a failure, towards a stepping stone for success. और ये let me tell you, this is a doable. इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है. Only thing is that you have to get on with it. तो अभी मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा जो आपको मदद करेंगी to make a conversion in life where one is not scared of failure and you take the failures in a very very positive way. सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है कि जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट हाथ में लेते हैं तो वी शुड बी वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट. एंड सोने पे सुहागा ये है कि यू मस्ट एन्जॉय व्हाट यू डू. मोस्ट ऑफ द टाइम वी may not follow it. We do a thing which gives us stress, it gives us pain, it gives us, a fear of uncertainty. But the day you start enjoying, आपको अपने काम में मज़ा आने लगे तो आपकी फटीग फैक्टर जो है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा. So, very essential to do that. Next is that if I aim too high, the target may not be achievable. So what I must do, I must, make optimal utilization of my application and set small goals to begin with. And once I have gained that requisite confidence that I can pull a bigger project, then only I must indulge in a bigger project. तो प्रैक्टिस जब आप करेंगे इसकी, जब आप इसके ऊपर सोच विचार करेंगे तो दिस अगेन विल बी अचीवेबल. There is a saying that bite only that much which you can chew conveniently. So that motto you must keep in your mind and go for small projects in the beginning with an acceptable kind of a risk profile or appetite as we call it. उसके बाद क्या होता है कि जब आपने एक प्रोजेक्ट मान लीजिए हाथ में ले लिया और वो प्रोजेक्ट जो है वो सेटबैक में कन्वर्ट हो गया. So we must develop those qualities by which we can do the truthful introspection, find out where all we went wrong, and all those areas, gray areas, or mistake must be rectified before launching the new project. A very important aspect. You must keep it in the mind. Next is, you see, your environment has a tremendous impact on your performance. So always surround yourself with जो लोग पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, स्मार्ट हैं, डायनामिक हैं. दिस विल हेल्प यू इन ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग. नेक्स्ट थिंग इज, you see, when we talk about the journey of life, we also talk about a journey of growth and evolvement. So when you are undertaking the journey of constant growth and evolvement, then you must take it as a journey and not as a destination, because learning never stops. And you must have an open mind. If you want to be a true learner, you must have an open mind and grasp as much as possible using your discretion, या जिसको हिंदी में विवेक बोलते हैं. एक बहुत ही important aspect है. And last but not least, as they call it,
No setback or failure should give you a feeling of a complex that you're not good. Everybody in this world is unique. You have to recover yourself, and your self belief must not be shattered no matter how big is the setback. So you pull your socks once again and get on with a new project with the same amount of enthusiasm and zeal. That's very important in life. There are numerous examples in the history of world where people they failed miserably and so many times, but finally they made it very big. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, and looking forward for your comments so that we can further refine and improve on this program. Thank you very much. God bless.